बिहेवियर को पॉजिटिव वे में एनहांस करती है. It helps us in our total well-being in a very, very wondrous ways. It centers our energy in a positive way, and when we look at them, we are healed and we reconnect with plants and trees and with life. Friends, I am not here talking all poetic और कोई भी superficial बात नहीं है. These are all the things what I'm sharing with you. They're all scientifically proven. अगर मैं यहाँ बैठ के scientifically इनको prove करना शुरू करूँ, तो I can go on and on and on. So believe me, these are all scientifically proven facts and thoughts which today I am sharing with you on this platform. Do you know that when we say thank you to plants and trees, हम अपनी और trees की एक energy तो enhance करते ही हैं in a positive way, but we also enhance the energy in a positive way of the entire planet. It is a very simple and a lovely practice which is highly, highly therapeutic, healing and spiritual. After all, Buddha said a beautiful quote which is again very close to my heart, and he said, spend your time on those that love you unconditionally. Don't spend your time on those who love you when the conditions are favorable to them. Prince Charles in 1986 interview also told about his love for the plants. And he said that whenever he goes to his garden, whenever he looks at his plants, he feels happy and he feels as if he's talking to them. And while he talks to them, he said that the plants and the trees and the flowers, they respond. Being with them is like being with his own children. And every tree in his garden has a meaning. आज की दौर की अगर हम बात करें बेटा, we all know that we have gone through a tough times of pandemic, COVID-19. आज के इस दौर में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी निकल के आई फ्रॉम अ कंट्री आइसलैंड, और वहां पे ऐसा देखा गया that because people were isolated, because people were quarantined in their homes, they were not meeting with each other, they all had undergone a state of depression. And after all, whatever we think, we act. So जब वहां पे ये देखा गया उनकी पूरी population had gone into distress, then वहां के जो forestry department के जो authorities थी, उन्होंने एक practice mandatory करी, and this practice was hugging a tree for 5 minutes. And this practice, once it became mandatory for each and every person of Iceland country, they saw that after some time, जो पहले लोगों को चिंता थी, they were anxious, they were worried, they were stressed, all things were taken care of, and now people had a drastic shift from anxiousness to being relaxed, to being calm. एक और स्टडी निकल के आई which said that during this pandemic time, because people were just trapped in their homes, they had nobody to talk, isolated, they started talking to these trees and plants, and talking to them really, really helped. It is also said that because trees are tall, because trees stand very still, they are better at absorbing Earth's energy and the universal force from the heaven. And hence, trees are always in constant meditation, and they emit a very subtle energy, and this is their natural language.
अगर आप लिटरेचर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे साउंड वेव एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं which establishes the fact that there is a communication between a man and a tree. और ये जो छोटी छोटी वाइब्रेशंस है, ये जो उनकी सटल एनर्जी है जो ट्रीज में से निकलती है, ये सब एस्टैब्लिश्ड है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम whenever you pass by a tree, अरे आपके तो you are so blessed, you have such a lovely lush green premises Zakir Hussain College has. I mean, I have fallen in love with your college greenery, such huge tall trees, so you are all blessed. So next time when you go through that premises, when you pass by, or whenever you get an opportunity to plant a tree, just remember the spiritual power and all the wonderful, beautiful gifts the plants and the trees have given to us, have given to this planet. Share its healing energy and enjoy all the beauty. And finally, अगर आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं. At least begin to learn how to listen to them. Yes, they do talk. You have to listen to them. So it's all about I am rooting a tree. ऐसा नहीं है. It is not about I am rooting a tree. It is all about the root. The tree is rooting for you. The tree is rooting for us. The tree is rooting for the humanity, for the human population. On this note, can I have the next slide, please? The next slide, please. Thank you, Dr. Deepika. So why not we create a small garden at our home? कहीं नहीं जा सकते, कोई बात नहीं. पैंडेमिक है, कोई बात नहीं. घर में है ना, घर में ग्रीन को लेके आते हैं. So why not create a small garden at home? Why not we work on our total well-being? And why not we seed the seeds of happiness, warmth and hope? आपके इनवाइट में भी ये कोट लिखा हुआ था कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा. The time has come when we have to dig the hole. The time has come when we have to plant a sapling. The time has come when we have to nurture it. So why not now? You know, it is like एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. So now is the time. Just bang on and do this activity. आपकी मैम ने भी बोला है that you all have to do a beautiful activity of a plantation drive and give your selfies, give your pics to the college department, and also by hugging a tree and write a beautiful, beautiful caption. वो एक ऐसा लगना चाहिए कि आपका एक soulful connect हो रहा है. Students, मैं हमेशा बोलती हूँ that it is very, very different when we say we are in nature and when we say we are with nature. Now, the shift has to be there from in nature to with nature. और ये जब हम in nature से with nature में आएंगे ना, तभी बेटा हम conservation को, plantation को एक better तरीके से understand कर पाएंगे. Now, a garden is a thing of beauty and a job forever. It is not a place, it is a journey. अगर आपने सोचा है, you know, if you have dreamt of a beautiful, beautiful garden, now is the time to do it. Do it small. Fail होंगे, कोई बात नहीं. हम फिर चालू होंगे. You know, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले.
उठने का समय आ गया है। कोई बात नहीं, हाथ में खुरपी लो, 2-4 पौधे लो, पॉट्स लो और शुरू हो जाओ। Now there are different types of gardens, बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन मैं सिर्फ आज मेन 4-5 पे फोकस करूंगी। One is the floral garden. You all know floral garden where there is more emphasis on just creating color and color in your garden. Then the vegetable garden, evergreen garden. एवरग्रीन गार्डन में बेसिकली हम सारे जो एवरग्रीन पेरिनियल्स होते हैं हम उनके साथ काम करते हैं। देन लैंडस्केप्स एंड देन आजकल की जो टाइम आ गया है बिकॉज स्पेसेस कॉन्स्ट्रेंट हो गया है, so people are really going for vertical gardens in a big way and it's a big boom in the gardens and all, and it's very successful. So the next is the vertical garden. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको एक साइंटिफिक एक थ्योरी बताना चाहती हूँ which you have to bear in mind before we really go further in my talk. Sir J.C. Bose, you all must be knowing, a very famous plant physiologist. उन्होंने दो चीजें कही थी। एक उन्होंने ये कहा था that plants respond to the attitude. That means अगर हम प्यार से अपने पौधे को नर्चर करेंगे, our plant is going to flourish well, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर हम गंदी तरीके से उसको बेटा नर्चर करेंगे, it will not flourish. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है that plants and trees they respond to the attitude. सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया दैट प्लांट्स एंड ट्रीज दे फील पेन एंड दे फील अफेक्शन. अगर हम उनके साथ अफेक्शनेट होंगे तो वो हमारे अफेक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड थर्ड थिंग ही सेड दैट व्हाइल वी show our affection to plant, the plants will flourish well. It's not just that the plants are getting benefited, even the good fungi and good bacteria that are there in the soil, they are also, their growth is also enhanced. And you all know, you're all botany students, कि जब microbial activity soil के अंदर अच्छी होती है तो आपकी soil good होती है, और जब soil good होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी फ्लरिश करती है. May I have the next slide please? Right. So अब हम शुरू करेंगे एक ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे so that these now my slides will help you do these small activities at home. And now this is the correct time. September, October, November, December is the correct time. मैं भी इस समय अपने घर पे लग गई हूँ because this is the time I will be doing chrysanthemums in my garden, because 2 months chrysanthemum करूँगी और फिर उसके बाद I will do florals and I will start working on making of my spring garden. ये मेरा घर का ही बेटा, ये मेरा गार्डन है पिछले साल का जहाँ पे मैंने फ्लोरल गार्डन्स करे थे. So let's start with the basic parameters for laying a garden. These are the basic parameters for laying any kind of garden. ये तो आपको basic tips आपको याद रखनी ही पड़ेंगी. उसके बाद then we'll talk pertaining to floral, vegetable and the evergreen garden. So in the basic parameters for laying a garden, the first is know your site. You should be familiar with your site. जहां आप रहते हो उसके लैंड स्ट्रेट क्या है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है और बेटा उसकी वाटर क्वालिटी कैसी है. मेरे यहाँ एनिमल मेनेस बहुत है, स्पेशली द मंकी मेनेस एंड पीकॉक्स भी आते हैं. सो आई हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल कंट्रोलिंग देम not coming into my garden and not eating away my saplings. And I am like that crazy gardener, who can do anything to just save my plants and my saplings.
एक बार तो इतनी बारिश आई और मैंने बहुत सारे क्रिसैंथेमम यंग सैपलिंग्स लगाए थे. यू विल नॉट इमेजिन, मैंने करीब 100 सैपलिंग्स लगाए थे. एंड आई, along with my umbrella, made my husband also sit, and we both were sitting with the umbrella कि just मेरे saplings को excessive पानी ना चला जाए और वो spoil ना हो जाए. So it is very important that you know, you need to know your site, then know your soil. This is very important. Soil की अगर हम बात करें तो बच्चे, we need to talk about its component, the kind of soil, humus content, compost, what kind of compost are you using, then time to time हमारा जब पौधा बड़ा होता है तो हमें कौन सी compost यूज करनी है, mulches यूज करने हैं, वो सब हमें अपनी soil को देना पड़ेगा, because then only we can facilitate and proliferate the growth of our plants. Because we all know that soil, it has to be rich in water, it has to be well aerated, it has to be porous, and it should have enough macro and microorganism activities. It should have a habitat to these micro and macroorganisms, and we all know that these organisms act as catalysts. Because more healthier soil and the better quality will be if we have more micro and macroorganisms as catalyst in our soil, and it will yield to the fertility and hence a better growth. So better soil means a better gardening success, and fertility of the soil, friends, is a garden insurance we have to have. The next important parameter is location and direction. This is very important. We all know that location is very important, because जितने भी ये हमारे floral gardens है या हमारे vegetable gardens है, they do best when the garden is in the south. या तो garden है या आपकी balconies हैं या terrace garden आप कर रहे हैं, अगर वो south direction में है तो वहाँ पे बच्चों आप आराम से फ्लोरल्स लगाओ और वेजिटेबल्स लगाओ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बैल्कनी, आपका गार्डन की डायरेक्शन क्या है. अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कि उसको कितना सन मिलता है. We all know that some plants are sun loving and some are shade loving, and when I say sun loving and shade loving, I say exposure of the plant to at least 6 hours sunshine. तो जितने भी हमारे फ्लोरल्स हैं और जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको मैक्सिमम धूप चाहिए. So we cannot have these gardens, these pots kept in the north direction. मेरा घर क्योंकि फ्रंट साउथ में है तो मैं आगे सारा फ्लोरल करती हूँ, एंड बैक साइड इज नॉर्थ, so I cannot do a vegetable garden in my house unless I climb up on the terrace. लेकिन because monkey menace है, I do not do that, because monkeys come and they just spoil your plants. Next important parameter is that you need to know your plants. इसके लिए थोड़ा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा तो होमवर्क करना पड़ेगा. You have to be very clear in mind कि मुझे फ्लोरल्स लगाने हैं, मुझे वेजिटेबल किचन गार्डन, हर्बल गार्डन बनाना है, या मुझे एवरग्रीन प्लांट्स करने हैं. ये सब आपके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल हॉबी के अकॉर्डिंगली होता है. Because some people do not want to create a kitchen garden or a vegetable garden. They just want to have a real good green view in their balcony. So they simply go for greens. The other important parameter is timing. This is very important. हर प्लांट का एक टाइम होता है. अगर मैं एनुअल्स की बात करूं, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फूलों की बात करूं, तो जो मेरे स्प्रिंग टाइम के फ्लावर्स हैं वो मैं उनको
स्प्रिंग टाइम के ऑनसेट पर ही लगाऊंगी, तभी दे विल वर्क। खाली एवरग्रीन ऐसे होते हैं जो पेरिनियल्स होते हैं, जिनको हम एक बार लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो हर्ब्स होती हैं या जो हमारे फ्लोरल्स होते हैं, उनका टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिंस दे कैन बी done by sowing the seed or by planting saplings, those small seedlings, उनका भी टाइम होता है। So the timing for sowing the seeds and sapling is very, very important. The next important parameter is that make a garden layout plan. एक रफ कागज लीजिए, उसमें आप एक अपनी प्रॉपर तरीके से स्केचिंग करिए। ओके, दिस इज व्हाट आई नीड, मेरे को अपना गार्डन ऐसे बनाना है। अगर बेड है तो उसको एक डिजाइन करो, अगर पॉट्स है तो उसको डिजाइन करो। पॉट्स को कैसे मेरे को रखना है, सेमी सर्कल में रखना है, लीनियर अरेंजमेंट में रखना है, ये सारी चीजें बेटा यू नीड टू बियर इन माइंड बिफोर यू रियली गो एंड स्टार्ट डूइंग द गार्डनिंग। परचेज प्लांट्स, सैपलिंग्स, seeds and the basic garden tools. ये तो होने ही चाहिए, because without all these you will not be able to make your mini garden or a big garden. You need to build on your imagination, creative skills, and you know it is like working in a garden or working with florals, with vegetables is like more is less. फेल होते हो तो कोई बात नहीं, you know why? Because garden is a place where experiments take place. कोई परफेक्शन नहीं होती वहां पे, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, you simply keep learning learning and learning. There is no perfection in the garden. और कई बार तो ऐसे होता है कि we propose and the God disposes. हम सोचते हैं कि हम ऐसा पौधा ऐसा लगाएंगे, हम मार्केट से लेके भी आते हैं और वी आर टोल्ड बाय द नर्सरी पीपल कि इसमें लाल रंग का फूल आएगा, वो लाल रंग का फूल आता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी अनफोर्सीन चीजें होती हैं गार्डनिंग के अंदर while you are doing gardening, but don't get scared. This is all just a part and parcel of your learning. Important is do not stop. Keep doing, and keep learning. Can I have the next slide, please? Okay, now I come to the first garden, that is the floral garden. And important parameters for this is that before I go on to the important parameters, I would say a beautiful quote, that is the earth laughs in its flowers. And a flower, you know, does not compete with the flower blooming next to it. It just blooms. It gives away its fragrance to even those hands that crush it. That is the magic of flower. The important parameter for creating a floral garden is you create your color palette. Focus on unity, because unity is diversity. Create areas that bring excitement. You can create areas that bring harmony. And you can play with various color combinations. Light color, dark color, and keep one thing in mind, that it is very, very prudent to be restrained. You cannot have everything screaming at you in your garden. Work with 2 or 3 florals, but work in unity and create beautiful, thrilling and vibrant areas. जो हल्के कलर्स होते हैं, they create peacefulness, और उनको लगाने से हमें ऐसे लगता है कि हमारी स्पेस बड़ी हो रही है। और जब हम वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी स्पेस छोटी हो गई है। सो इट्स टोटली योर चॉइस, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। डिजाइन विद शेप, दिस लीड्स टू sheer artistry and aesthetics. When I say design with shape,
then I'm saying the shapes of the different flowers. Say for example, petunia, it is round. If I talk about salvia, it is conical. So you can play with different shapes and different sizes of the flower. Bring them together. अगर आप पॉट्स में काम कर रहे हो तो पहले एक रो पिटूनिया की कर दो, उसके पीछे आप सैल्विया की कर दो. No matter how many pots you do, but at least do in a organized way. Because जब आप कोई भी काम organized way में करते हो तो उसकी जो presentation है that is always 100%. It should look beautiful. It should look highly presentable. The next parameter is selection of flowering plants. इसके अंदर एक ऐसा फूल होता है you choose as a showstopper flower and create a focal point. Give that area an eye, and from there you can go to other areas. तो वो आपका एक बहुत ही कैची एरिया होना चाहिए, एक मेन फोकल पॉइंट होना चाहिए. उसको आप बेटा हाईलाइट करो with the best looking flower in your eyes. You see, beauty lies in the eyes of beholder. तो जो आपको पसंद है आप वो करो. अगर आप सेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 5-10 पॉट्स के साथ काम कर रहे हो, 5 में एक तरह के फूल लगाए, पीछे 5 एक तरह के फूल लगाए, तो बिगिनिंग में कोई एक ऐसा बड़ा पॉट लेके उसमें एक थर्ड फ्लावर लगा दो, and that will then become a focal point of your area. So always choose a floral plant which can act as a showstopper. And then of course, yes, you have to keep in mind the height of the plant. Some flowers are short statured, छोटी हाइट के होते हैं. So definitely need not to say आप उनको आगे ले लो. तो जैसे स्कूल में याद है जब हम लोग लाइन लगा के प्रे करते थे मॉर्निंग में, तो जो सबसे छोटे बच्चे होते थे हाइट में वो आगे होते थे और जो सबसे टॉल होते थे वो सबसे पीछे होते थे. बस दैट इज द वे. जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं, पिटूनियाज होते हैं, एलाइजम है, पेंजी है, फ्लॉक्स है, इन सबको बेटा आगे ले लो. और जो आपकी सलाइवा है या जो आपके डॉग फ्लावर्स हैं, जेरेनियम्स हैं, स्वीट विलियम्स हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं हाइट पे, इनको आप पीछे ले लो. अगर आपको पॉट को डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना, देन आजकल वो जो आयरन के स्टेप्स बन जाते हैं, दे आर इजीली अवेलेबल. गो एंड गेट दोज आयरन स्टेप्स फ्रॉम द मार्केट. वो हर फॉर्म में, हर साइज में मिलते हैं. उनके ऊपर यू कैन ब्यूटिफुली प्लेस योर पॉटेड प्लांट्स. So that will take care of your plant height of your plants. The next important parameter is that you need to rely on odd numbers. You know, this is a very beautiful visual design trick. जब हम कोई pot लगाते हैं, चाहे वो 10 inches diameter का है या 12 inches diameter का है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, या तो एक पौधा लगाना depending upon the diameter, या 3 लगाना या 5 लगाना. ये जो ऑड नंबर का होता है, दिस इज ऑलवेज अ विजुअल डिजाइन ट्रिक. एंड बाय डूइंग दिस वी एनहांस, वी ब्रिंग इन सिनर्जी एंड कोहेसिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन आवर गार्डन और इन आवर पॉट्स. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स you need to take care while you are doing a floral garden. Another important thing I would like to add कि ऐसे फूलों के साथ शुरुआत करो जो बहुत स्टर्डी हैं. एंड द मोस्ट स्टर्डी इज मैरीगोल्ड, दैट इज गेंदे का फूल, एंड पिटूनिया. पिटूनिया तो बेटा n नंबर ऑफ कलर्स में आता है. गो फॉर सॉलिड कलर्स. मेरे को पर्सनली सॉलिड कलर्स हैं अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने गार्डन में सॉलिड कलर्स यूज करती हूँ. I don't go for starlet variety of petunia or the shaded variety of petunia. So that's up to you, which one you want.
May I have the next slide, please? Yeah. So next is the important things we need to take care while we are doing a vegetable garden. You all know vegetable garden is a very rewarding experience क्योंकि हम अपने हाथ से पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं और उसमें जब एक छोटा सा टमाटो आता है या एक छोटा सा ब्रिंजल आता है तो आजकल तो हम उसको अपने स्टेटस में डाल देते हैं. And you can imagine the immense happiness we get out of that because that is totally an organic food. We get from our own potted pots, and it is deeply, deeply gratifying for our soul. So this is a wonderful feeling of doing a vegetable garden. और पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे नोन हैं जिन्होंने बेटा हर्बल गार्डन बनाया, किचन गार्डन बनाया या वेजिटेबल गार्डन बनाया. These are all one of the same thing. छोटा छोटा पुदीना, धनिया, पार्सले, लेटस सब लगाया. So it is very important that you need to choose the vegetable. सबसे इजी वेजिटेबल है टमाटर लगाना, ब्रिंजल लगाना, भिंडी लगाना. एंड हर्ब्स की अगर बात करूं तो स्पिनच इज द इजीएस्ट. तो ऐसा काम करो जो सबसे पहले सिंपल हो, बिकॉज अगर आप एक सिंपल से शुरू करोगे तभी यू विल बिल्ड ऑन द कॉन्फिडेंस एंड देन स्लोली यू build up on adding more and more type of plants. So very important that you need to choose the vegetable. Start small and get immense fulfillment. Now, another important thing is that you can coordinate with another type of plants. Well, I haven't ever done. I have big beds in my garden. So I am actually planning that this season, because spring season is round the corner, and this is the best time to go for the vegetable garden because the temperature is very conducive, right? And we have n number of flowers waiting, for us to be planted in our garden. तो इस बार मैं सोच रही हूँ that अगर मेरे 3 बेड्स हैं तो एक बेड मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें रेडिश लगा देती हूँ, ऊपर भी फ्लावर नीचे भी फ्लावर. So this is an experiment you can do with your garden also, with your pots also. As I told you, garden is a place of experiments. कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो जरूर निकल के आएगा. So you can coordinate with another type of plants. And as I just told you, selection of the season is very, very important. Even capsicums do very well these days. So you can get capsicum का sapling होता है which is there in the nursery, वो लाइए और उसको लगाइए. So stress should be on carefully sourcing seeds, saplings, and then of course you need to protect the plants. अगर आपको ऑर्गेनिक रखना है तो आपको अपनी सॉइल्स को ही बहुत फर्टाइल बनाना होगा. अदरवाइज मेरे यहाँ पे बेटा सॉइल में बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टर्माइट प्रॉब्लम हियर. तो मैं ना चाहते हुए भी मेरे को केमिकल ट्रीटमेंट, स्प्रेज, डीटीटी और इन सब का मुझको करना पड़ता है. सो यू कैन टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एफिड्स, इंसेक्ट and some fungal growth. Very important is that you need to continuously watch the vegetables grow. Vegetables को ऐसी जगह मत लगाओ, या for example even plants को, अपने florals को भी ऐसी जगह मत लगाओ जहां आप उनको daily ना देखो. You have to watch them daily. Make an appointment with your plants daily. Observe them daily and enjoy the fruit of your labor. Can I have the next slide, please? Now I come to the important parameters for an evergreen garden. अब अगर डायरेक्शन ऐसी है या जगह हमारे पास कम है और हम चाहते हैं कि हम खाली एवरग्रीन गार्डन लगाएं, no problem, go ahead.
because friends, green color soothes our mind, helps regulating our blood pressure, relieves anxiety and keeps us calm. If you recall, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, they are also wrapped in green color. Probably this is the reason, because जो हमारे ऑपरेटिंग सर्जन्स होते हैं, they are also in a state of anxiety when they have to operate upon a body. To keep them calm, keep them cool, relief from anxiety, look at the green color. This is the magic of the green. So when we are doing an evergreen garden, we need to focus that we can incorporate, we can inculcate herbs, shrubs, trees and climbers. Let your garden have everything, but in a organized way. Unity in diversity. ट्रीज की बात करूं तो अभी डॉक्टर बबीता शायद हम आगे टपोरी भी दिखाएंगे, that we can have beautiful taporis made, and I will tell you what tapori is. But before that, let me just tell you a very important parameter, that is we need to select a hardy, low cost and easily maintainable green plants. हम नर्सरीज में जाते हैं and we are allured by very exotic ornamental plants. Better don't invest on those plants. You will land up nothing after 2 months. Always be very intelligent in buying your plant. Select sturdy and the hardy plants which are low cost and they can be maintained easily when you are a startup. अगर आपके पास नीचे बेड्स हैं, अगर आपका नीचे ग्रीन गार्डन है, जमीन है, you can always discriminate your garden, your beds, your greens from the grass by creating a hedge plant. You can beautifully you can beautifully clip it, beautifully prune it, and a beautiful nice hedge can be created. The big trees if you have in the garden, say for example, if you have ficus, if you have casuarina, if you have bottle brush, panda, these are all the trees which can be converted. If they are clipped, they can be converted into very nice architectural shapes. When I say architectural shapes, then I say you can make a beautiful umbrella shape, you can make a round, you can even go for a square or for a rectangular, but that's little tricky. I mean, you can do tapori. English में इसको टोपियारी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको टपोरी बोलते हैं. You can do, but it needs little set hands. You need to have a cutter for that, you need to have a scissor for that, and this is an art of clipping, cajoling the big trees. और ऐसी ट्रीज हम यूज करते हैं जिनमें बहुत थिक फोलिएज होती है. जो बहुत बड़े पत्ते वाली ग्रीन्स होते हैं ना, उनको नहीं हम टपोरी में कन्वर्ट करते. तो जो बहुत थिक फोलिएज होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली साइंटिफिक थिंग इज हम उनकी एपिकल स्टेम्स को बेटा हम क्लिप करते जाते हैं. और जब हम उनकी एपिकल स्टेम को क्लिप करते जाते हैं तो जो लेटरल ब्रांचिंग होती है, साइडवेज ब्रांचिंग, लेटरल एंड सब लेटरल, वो ग्रो करती जाती हैं एंड फाइनली वो एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर बन जाता है which we call it as a tapori. Now to add, because हमको कई बार लगता है कि यार ये तो बहुत ग्रीन हो गया, लेकिन ग्रीन्स में भी बहुत डिफरेंट शेड्स होते हैं. You get a nice green color, you get pinks, then light reds, then golden greens भी होते हैं, then towards whitish plants भी होते हैं. So you can actually do these color combinations also when you are creating an evergreen garden. And yes, you can always add garden accessories. Garden accessories means you can add beautiful mushrooms. इतने सुंदर मार्केट में मिलते हैं. फ्लेमिंगोज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, स्मॉल कोट्स होते हैं. आजकल तो नर्सरीज में जो ऐसे गार्डन शॉप्स होती हैं, they have such beautiful garden accessories which you can always buy, bring in home and create your creativity to the fullest.
And then finally, yes, you need to work on the total presentation of your garden. May I have the next slide, please? Yes, this is thank you, Dr. Babita, for showing this. This is a tapori which has been made. I think it's a ficus plant. Ficus में से इसको ये बनाया हुआ है. But जो बहुत ज़्यादा set hands होते हैं, वो ही इसको बना सकते हैं. But yes, ऐसा कुछ भी नहीं है. Nothing is impossible. We can all do that. और मैं बार-बार वही कहूँगी कि उसके लिए we need to love our plants. We need to treat them as our babies. जब वो एक sensitivity develop होती है, तभी बेटा हम ये काम हम कर पाएंगे. डॉक्टर बबीता, एक और स्लाइड है आपके पास ना? Yes. So this is a simple one single architectural shape, which is an umbrella kind semicircle. So this you can do. मैंने भी एक करी है. ये है मेरी जेड की. This is a jade plant I have done. और ये जो हम टपोरी करते हैं ना, ये हम वायरिंग के साथ भी करते हैं. तो ये मैंने वायरिंग मैश लगाई हुई है, जिसके चारों तरफ मैं इसको जो इसकी एपिकल स्टेम है, इसको इफ आई कीप कटिंग इट, तो ये और भी खूब अंदर से डेंस हो जाएगा एंड फाइनली एक बॉल लाइक अ स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज अ टपोरी. May I have the next slide? Yeah, so it is like this is my concluding slide. So for all that I have spoken today, I have shared with you. It is very important that now is the time when we have to just walk into the nature. We have to just lose our minds and we need to find our souls and find a route to roots. मैं फिर कहूँगी that it is a journey जहाँ हम better से best बन सकते हैं by conserving our nature, by doing a mindful tree plantation and by connecting with our lovely, lovely, wonderful, magical Mother Earth. On this note, I'll say thank you so much for keeping patience, bearing with me and listening whatever I shared with you all on this platform. एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे उससे पहले. जैसे मैंने सीड्स के बारे में बताया कि हमें बेटा थोड़ा सा इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम सीड से कर रहे हैं तो हम कैसे सीड से प्लांटेशन कर सकते हैं, कैसे हम सीड्स को सो कर सकते हैं. क्या होता है, जैसे मेरे पास ये दो तरह की यहाँ पे सीड्स हैं. एक पालक की सीड है स्पिनच की, विच इज वेरी लाइट. तो कई बार ये जो हर्ब्स की सीड्स होती है ना, दे आर वेरी वेरी लाइट एंड दे आर वेरी स्मॉल. सो वी नीड टू सिंपली स्प्रिंकल लाइक दिस. ये अगर मेरे पास ये एक पॉट है, ये अगर मेरे पास एक पॉट है, तो ये जो मेरे पास पालक का जो सीड है, मैं इसको ऐसे स्प्रिंकल करूंगी and I'll just cover the seeds gently with sprinkling the soil over it. इसको हम बहुत ज़्यादा embed नहीं करते. So this is when we do it with the light seeds. Then second मेरे पास ये है sunflower की, क्योंकि sunflower की seed थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी वजनी होती है as compared to the other lightweight seeds, lightweight seeds. तो इसको हम जस्ट एन इंच, इससे ज्यादा नहीं, 1 इंच हम इसको नीचे दबा देते हैं मिट्टी में और फिर हम उसको कवर कर देते हैं. बहुत ज्यादा सीड को हमें नीचे नहीं डालना, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा सीड को नीचे मिट्टी में एम्बेड कर देंगे तो वो वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी बेटे, वो सैपलिंग में नहीं कन्वर्ट होगी. तो इस सीड्स के साथ हमें ये ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है कि खाली हमें स्प्रिंकलिंग करनी होती है सीड की डायरेक्ट ऑन द एरिया जहां पे हमने अपने पौधे को उगाना है, लेकिन कुछ सीड्स के लिए हम एक छोटा सा पहले प्लेस क्रिएट करते हैं, सीड से हम सैपलिंग्स बनाते हैं एंड देन फ्रॉम देयर आफ्टर 10 to 15 days once our saplings become sturdy, then we transfer our saplings from that place to the area of interest जहां पे हमने अपने प्लांट्स को ग्रो करना है. So this is about seeds. Third thing which I want to show you, this is the chlorophyton plant.
इसको हम स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं। ग्रीन्स में हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कितने भी पैसे लगाएं उतने भी कम है। बट आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन selecting those plants which can be vegetatively propagated during the season. ये समय का सीजन है, यहाँ हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत अच्छे से ऐसे प्लांट्स के साथ कर सकते हैं, एंड क्लोरोफाइटॉन इज वन। इफ यू सी केयरफुली, ये इसके छोटे छोटे यहाँ पे वाइट छोटी इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि ये दिख रही हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से इसको डाइसेक्ट करोगे, इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे इस पर्टिकुलर छोटे से प्लांट को फ्रॉम द मेन मदर प्लांट एंड देन पुट इट इन अ सॉइल, तो आप देखो एक प्लांट से ही ड्यूरिंग द सीजन यू कैन हैव मल्टीपल क्लोरोफाइटॉन. So why spend money on unnecessary exotic plants? Green is a green. You simply have to just work mindfully and intelligently. तो आप देखो इसके अंदर कितने सारे ये बेबी प्लांट्स हैं, तो जब इनके नीचे ये छोटी छोटी रूट्स आती जाएंगी, मैं इनको डिस्कनेक्ट करती जाऊंगी और नए पॉट्स में डालती जाऊंगी। तो ये तो हो गया क्लोरोफाइटॉन। ऐसे ही एक another very important plant which is very common is syngonium. ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, और इसके भी इफ यू सी इट केयरफुली, यहाँ पे ये इसकी रूट्स हैं। दैट मीन्स इस सीजन में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो व्हेन योर सिंगोनियम ग्रोस लिटिल मोर, अगेन यू कैन डिस्कनेक्ट द ब्रांच ऑफ सिंगोनियम फ्रॉम द मेन मदर प्लांट एंड यू कैन रीपॉट इनटू अ न्यू पॉट। तो एक सिंगोनियम से आप बहुत सारे सिंगोनियम प्लांट्स बना सकते हो। और वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो आपका जेड प्लांट है, जो आपका सिंगोनियम है, ये नासा ने भी बोला है कि वास्तु के हिसाब से दिस इज द मोस्ट a positive plant and brings lots and lots of luck, success, growth and prosperity. तो हम ऐसा पौधा लगाए ना जो कि, और ये एयर प्यूरिफायर भी है जो कि आज की नीड है। सो व्हाई नॉट वी फोकस ऑन ग्रोइंग सच इजीली मेंटेन प्लांट्स जो हम इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं घर में, और जो नॉविस है, हम लोग जो स्टार्टर्स हैं, वो भी इजीली कर सकते हैं। सो दैट ये धीरे धीरे हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन डूइंग बिग थिंग्स। डॉक्टर करुणा, ये क्लोरोफाइटॉन और सिंगोनियम को कितना सॉइल के अंदर इसको होना चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। देखो, अगर तो मैंने यहाँ से इसको काट के ये जो इसकी जो बाहर की जो रूट्स विजिबल है ना, दिस हैज टू गो इनटू द सॉइल। जैसे ये अभी सपोज ये मदर प्लांट है, और द मदर प्लांट में से ये एक प्लांट को अगर मैं कट करूंगी यहाँ से, सो देन आई हैव टू एम्बेड so much so that इसका ये पूरा रूट्स जो है it should go deep into the soil. ये हमको इसको रूट से नहीं निकालना है, हम इसको सिर्फ कट कर सकते हैं, और जो रूट है वो बीच में जानी चाहिए, जो रूट नजर आ रही है। yes, yes, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है। तो फिर क्या होगा कि जो हम ये कट करेंगे ना, ये जो स्टंप रह जाएगा, इससे ये और प्लांट आ जाएगा। तो ये हमारा मदर प्लांट ऐसे ही रह जाएगा, बट वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम द मदर प्लांट। Same thing goes true with the chlorophyton and with the jade plant also. बट ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स नहीं बाहर आ रहे होते, जैसे कि क्रोटॉन्स हैं या बोगनविला है, जिसको कि हम स्टेम से काट के लगाते हैं, तो वो स्टेम कितनी अंदर होनी चाहिए सॉइल के? उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास क्रोटॉन है ना, मैं उसमें जो बड़ा क्रोटॉन की एक ब्रांच लेती हूँ। जैसे इस सीजन में मॉनसून में उसको थोड़ा सा मैं नाइफ से आई जस्ट स्क्रैप इट लिटिल, एंड देन आई पुट लिटिल रूटेक्स, and then I put a loose moss there and I tie it with a polythene, and then I forget for 10-15 days. वो उसको कहाँ रखते हो आप? बाहर रख देते हो उसको? पेड़ में ही वो मैं बांध देती हूँ। उसको स्टेम कटिंग करनी है ना फाइनली, तो उसके लिए वो रूट्स इनिशिएशन बहुत जरूरी है।
तो वो बड़े पेड़ पे ही, एक मदर पेड़ पे ही मैं 2-3 जहां से मेरे को उसको कट करना है, मैं उसको 10-15 मिनट तक उसको 10-15 दिन तक रखती हूँ. And when I just take the polythene out, take the loose moss out, I can see the initial root growth there. तो जब वो रूट हो जाती है, then I disconnect it from the main plant and then I put it in the bed or in the pot. So even the bougainvilleas also you have to treat the same way. I haven't done ever with the bougainvillea, but yes, with bougainvillea also you can do, because मेरे को एक प्लांटर किसी ने दिया था जिसके अंदर फाइकस के साथ बोगनविला को, वो कहते हैं ना वो स्टॉक एंड सायन, वो दो चीज, वो जो ग्राफ्टिंग होती है, वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग, तो वो फाइकस के साथ बोगनविला को दोनों को क्लिंक करके वो एक प्लांट देके उन्होंने मेरे को कभी गिफ्ट किया था, वो अभी भी मेरे पास है. So I guess we can do this vegetative grafting in these plants. So almost all plants can be grown like this by cutting the stem. Almost all. Almost all. All rose itna beautifully it can be grafted. Even jasmine, motia, champa, these all are beautifully grafted like this. I have endless questions. I think I'll leave the stage for other questions because so. Dr. Karuna, do you have anything else to show us? No, I think I am done. Okay, okay, fine. Yeah, thank you very much for such a simple and elegant presentation, and you have really shown us the path to make our spaces green and beautiful. But we have to work mindfully. It cannot be done blindly. That is what we all have learned. And I'm sure today what is more important is to make the beginning. That is what we have done today. And we have asked the participants to bring a pot and a twig along with. And we shall be doing this it is an activity where you will be asked certain questions. Probably that will set you thinking and going. Since most of us are botanists here, it may not be that challenging for them, but other than that, it is always challenging to see what you have brought. Have you got it mindfully or just like that? Because last minute you were rushing and you picked up a pot and a plant. Did you think about the pot? Did you think about the kind of the plant? Did you think about the size, the color, the shape, and for what are you bringing it? These are various points that we'll be taking up after question answer session. So we will have formal vote of thanks. But before that, with your permission, there are some questions from the participants that Dr. Deepika will be presenting to you. Dr. Deepika, over to you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I hope you all enjoyed the very interesting talk by Dr. Karuna Paul Gupta. Now we will have the question and answer session. I request all the participants to please write their questions in the chat box. Dr. Gupta will be, I'm sure, pleased to answer all your queries. I hope I am able to answer all the queries. और in case मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं पढ़ के जरूर बता दूंगी, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी. एंड डॉक्टर बबीता, प्लीज हेल्प कर देना मुझे. You are a master of your subject. You will not be. We have to learn from you. Ma'am, now I'll be reading out the questions from the participants. Dr. Deepika? Yes. Yeah, we would definitely like to give a little more attention to students, but Dr. Devyani has raised her hand. Can we take her question first? Dr. Divya, this is Dr. Divya Tiwari. I'm from Garden Committee. Good afternoon, ma'am. It was a very good presentation, though I was a little late. But I have one problem. I hope you're able to give a solution to it. In my drawing room, I have a small peace lily potted plant, which wilts every time I try to enliven it. I fail. Could you please guide me? How could I sort of bring it back to life, or what exactly is needed? What amount of sunlight, or where am I going wrong? Well, so, lily pot is an indoor and an oxygen-giving plant. Dr. Divya, I couldn't hear you properly. I just want to know the name of your plant which you have kept in the drawing room. Peace lily, ma'am. Peace lily, okay. How often do you keep it outside? Once in a day.
before, not on a very, I mean, not in a lot of scorching heat, because I'm told only a bit of sunlight is needed for it. But every time I mean, I've been trying for 2 years and I'm failing. It's the 4th time I've got a new sapling. Okay, so you have problem in its flowering. Yes. The leaves, they wilt off. Okay, have you ever tried NPK fertilizer? No, I haven't. Because I have generally seen, like मेरी भी एक friend यहाँ पे है फरीदाबाद में जिसको पीस लिली के साथ प्रॉब्लम थी, एंड लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू कि हमारे फरीदाबाद का क्लाइमेट, आई मीन पानी और सॉइल ऐसी है दैट पीस लिली मेरे एंड पे बिल्कुल वर्क नहीं करती है. Maybe Noida shares the same misfortune. या वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ये एरोगेंट बच्चा है, Okay. तो उसको टेम करने की जरूरत होती है. तो एक बार एनपीके ट्राई करके देखिए, बिकॉज जो means national and P means Pondicherry, T means Trivandrum. Yeah, nitrogen, phosphorus and potassium. So the phosphorus takes care of the flowering and the rooting of the plant. तो अगर वाइट कलर नहीं, वाइट फ्लावर नहीं आ रहा है, सो एक बार आप एनपीके का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल के देखिए. अच्छा, NK, K is potassium. All right. ठीक है मैम, ठीक है. Thank you so much. So nice of you. It's only, I think, once in a week or something that I have to put the fertilizer in it. I have to enrich in it once in a week or what? No, 15 दिन में एक बार, 15, just add little once in 15 days. जी. और वो डाल के देखिए. और फिर मुझे लगता है अभी मॉनसून में ना, अभी आप अपने पौधे को बाहर ही रख दो, बिकॉज वो क्या है ना, जितना भी हम पानी खुद से दे, लेकिन जो मॉनसून का पानी जब पौधे पे पड़ता है ना, तब उसका ही और होता है. यू नो, इट इज लाइक धीरे धीरे रे मना, धीरे होए माली 100 घड़ा. बिल्कुल है पौधों के साथ कि हम कितना ही खुद से पानी डाल लें, लेकिन जब ऋतु आती है ना, तभी पौधों को फल लगता है. तो आप ना अभी अपना पीस लिली को पीसफुली उसको बाहर रख दो, एंड जस्ट फॉरगेट फॉर सम टाइम. मे बी इट गेट्स रेनी वाटर, यू नो, मे बी दैट may flourish it well and may. Ji, thank you so much. That was very insightful. So can adeniums also be kept outside in this weather, in the monsoons? Adeniums we can keep outside? Adenium, let me tell you, is the most loved succulent. और एडेनियम को आप जितना बाहर रखोगे ना, उतना बेटर है. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो जो उसकी ट्यूबरस स्टेम ग्रोथ होती है ना, उसको पानी से बचाना. उसके लिए जो आपका पॉट है, क्योंकि यूजुअली ट्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगता है एज अ बॉन्साई, तो उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए कि जो इतना रेनी वाटर है वो ड्रेन आउट हो रहा है पॉट में से. आई हैव सम 10 एडेनियम लाइंग आउटसाइड. पानी आता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर ड्रेनेज इन द पॉट, वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है. और अभी वो जो पानी उनको अभी इस समय लग रहा है ना, तो छोटे छोटे बर्ड्स भी आ गई हैं. तो एक बार समर में इतना एडेनियम इतना ब्यूटीफुल कलर्स देता है फ्लावर के. अब इस सीजन में भी बिकॉज रेन्स थोड़ी लेट हुई है, तो अब मेरे 3-4 एडेनियम ऐसे हैं जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स खिलेंगे अनदर वीक्स टाइम. वो सब मेरे बाहर है. और एडेनियम को ना बाहर ही रखना, कभी उनको अंदर नहीं रखना. कभी पार्टी वगैरह है, देन यू ब्रिंग देम इनसाइड, अदरवाइज कीप देम आउट. नहीं, बाहर तो रखते हैं, बट वी ट्राई टू सेव देम फ्रॉम द रेन, बिकॉज वो ज्यादा रेन से लगता है कि कहीं वो मैंने कहा ना, वो प्लांट्स आर सो मैजिकल, दे हैव देयर ओन वे ऑफ टेकिंग केयर देमसेल्व्स. बट ड्रेनेज का ध्यान रखना कि ड्रेनेज ना हो. सेकंड थिंग क्या होता है, कई बार ना बचाने के लिए ना कोकोपीट लगा दो, या वो जो लूज मॉस होती है ना, वो लूज मॉस ऊपर लगा दो. बिकॉज इससे क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर को, ये वाटर रिटेंशन होती है इनमें, कोकोपीट हो गया या मॉस हो गई, तो जब अब ये आप पॉट के ऊपर रख दोगे ना, तो excess water will be retained by them. It will not go into the soil and will not spoil your plant. तो आप ये भी करके देखो. I think रीटा मैम कुछ पूछना चाह रही हैं. खोसला.
नहीं, मैं पूछ नहीं रही, मैं बताना चाह रही थी कि Most in my welcome. adeniums I use porous Khangar soil, and I make it a bit slanting from the stem so that all the water which falls just washes down. So either I put tikri or I put the Khangar soil, and the adeniums are flourishing in the rain. Nothing is happening to them. So, and it is very porous soil and drains out well. Wonderful, So, wonderful. Sarika, you I also just try that. Use Khangar and tikri and make a slanting kind of a thing on the stem. Acha. So all the water slants down, slides Okay. down. Dr. Karuna, I just wanted to say that Dr. Khosla is the one who has conceived this whole idea of garden that you have appreciated. It is her baby Oh, that how has nice. been handed over to us. So we are trying our Everyone, level best to, at least maintain it. If we can't take it forward, but at least maintain it. So and thank you, ma'am, for sparing time and being with us here. And we have always been troubling you, and we'll keep troubling always. there's no trouble. Ma'am, I'm Dr. Devyani from Zakirsan College only, and I'm enjoying your talk, lovely talk with my loving plants, and I'm sitting in the balcony enjoying my plants. And So showing you off. can understand my, the passion and love for the plant. You can see my plants; they are really fresh greens. Ma'am, I have one query regarding the plants only. Garden is a very, costly hobby. I should not call it hobby. I should say it's a love towards the plant. But sometimes it is really very costly. When you go and purchase the plant. So can you suggest? One of the suggestion was when we can go through vegetative propagation that you have shown through the spider and syngonium plant. So, is there any government industry who provides all the kinds of plant species where the students can go and collect? If you can give some light on this, because sometimes it's very difficult to buy plant because one plant may cost 200 or 150 also. So we as a teacher or we can purchase plant. We can purchase for our organization, but it is very difficult to purchase for a student. So if you can give some idea, one idea is we can vegetatively grow the plant. Or nursery, really, especially where the student can go and purchase plants. Yeah. Or not purchase, actually they can get it free of cost. Free of cost, so I will say that the Zakir Hussain premises is so rich. मेरा तो वहाँ भी मन ऐसे करता है कि सब I request the gardeners to give me a twig of all the plants because that's the best. Dr. Karuna, let me tell you, यहाँ पे हम अपने घर से लेके आते हैं, हम ले जा नहीं सकते यहाँ से कुछ भी. We have been getting, but we have not been taking. As a teacher, हम भी ले सकते हैं. मुझे लगता है students It के will be लिए a mutual exchange. Now we'll also have to take something from you. I have seen you have beautiful dog flowers. So we would like to take seeds from you. But I request teachers, can we take some questions from the students? Yes, ma'am. Babita, can I just butt in for a moment? Pardon, ma'am? I can just speak for a moment. Dr. Karuna, you really spoke what was very close to my heart, and I can understand your passion. Thank you, ma'am. And I loved what you said about the Osho's quote. I had not heard it before. So many times while teaching ecology, I felt I was just doing some spiritual talk, but just close to nature. So nature is really helpful, and you really touched all aspects of gardening, and it really resonated well with me, and I really enjoyed it. Thank you. And one thing I wanted to tell the students, as you said, to increase microbial activity in your garden. So these days, banana peel mash or sour curd, you can just use 1 spoon and it can add, like Divya was saying about potassium. So banana peel is the easiest source of potassium for flowering. So that can be used. मैम कैसे यूज करना है बनाना पील को? मैम कैसे यूज करना है? बस उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो. हाँ, ग्राइंड करके जस्ट मिक्स विद वाटर एंड स्ट्रेन इट. और जहाँ आपको फ्लावरिंग चाहिए, just add it there once in 10 days.
or spray it with a spray can. So I think, Dr. Karuna, you really touched each and every aspect, and I really enjoyed your garden architecture. Thank you so much. All the best. Thank you. Thank you. Dr. Deepika, can we have some questions from the students? Yes, ma'am. Ma'am, we have received several questions actually from the participants. I'll just read out a few questions. So the first question is, does planting common house plants like crotons, dracaena, succulents, spider plants in balconies actually make any difference in improving the oxygen level? मैं तो ये बोलूंगी कि हर वो पौधा जो ग्रीन है वो ऑक्सीजन देता है. ये तो मार्केट में ये एक सेलिंग गिमिक हो गया है, एक फैड हो गया है that we have started going for oxygen purifiers and air purifier kind of plants like ericas हो गए या bamboo हो गया and stuff like that हो गया. But even if you have chlorophyton at home, even if you have syngonium, jade at home, or any such small plant, these are all oxygen givers. Just as simple as you need to understand. Don't fall into that category of the selling gimmick. Just use your mind, be intelligent, and just go for it. Okay. I have a request here. Dr. Karuna, if there are more questions, can we email the questions to you? Because we have another webinar at 5:30. So there is a little bit of time crunch. You can always do that we can mail you the questions, and participants. Dr. Deepika, you can take 2 more questions and then we will go ahead with the vote of thanks. Ma'am, there's one more question. Lack of greenery in urban cities is a known problem. How can an individual contribute to its environment through balcony gardens? And which indigenous plants can be grown in balcony gardens? Well, yes, this is a problem we are foreseeing here, and we are encountering that because of the urbanization, the societies have come up, and we need to, keep our balconies green. And when I talk about the native species, then I will say that you go for Gulmohar plant, you go for Picoma, you go for Amaltas. These are all the plants which can be put in the big pots, and it's all about you need to nurture them, so you don't let them grow big. You can let them grow small by just cutting the apical stems, and the plant will become bushy and shrubby. So instead of transforming it into a tree, you can have it in the form of small shrubs. So these are the native species of plants which you can always go for. Okay, there's one more question, ma'am. There are many alternate ways to plant trees nowadays if one does not have sufficient space for plantation. So there are some organizations that offer facility of planting trees on donation basis. So you can give them some money and they'll plant trees for you. And there are some adoption services which are also available. So what are your thoughts about how legitimate how legible these services are? Beta, let me tell you, I'm hearing it for the first time. But as far as my intelligence goes, anything we are doing in promoting the greens, चाहे वो donation basis पे है, चाहे वो दूसरे basis पे है, all these drives, all these procedures are most welcome. But as far I know that government nurseries और एक हमारे दिल्ली में असोला भाटी नर्सरी है, जहाँ पे ये जो हमारे दिल्ली के नेटिव स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो ड्विंडलिंग स्टेज में हैं, उनको हम वहाँ पे जो असोला भाटी नर्सरी जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर दिस इज द ओनली नर्सरी which is doing a wonderful job of taking care of these native species. और वो दिल्ली के ये सारे प्लांट स्पीशीज को वहाँ पे सैपलिंग्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, एंड वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं. वंस दे आर ग्रोन, उनका फर्दर एक आइडिया है कि दे विल ट्रांसफर दीज बिग प्लांट्स टू द अदर गवर्नमेंट नर्सरीज इन दिल्ली, बाय हेंस creating a demand and supply.
तो जितनी इसकी डिमांड बढ़ेगी उतनी वो सप्लाई इसकी बढ़ाएंगे. So it is that way this whole drive is right now on in Asola Bharti Bird Sanctuary. Okay, so we'll have to stop today. Stop here. We'll have to. Are there more questions? Ma'am, there are more questions. So is it okay, as I've already asked you, we can email the questions to you, and since we'll be having the participants' names, so you can share the response from you with them. All right. So thank you, Yes. ma'am, answering questions from the participants. It was a pleasure to hear you today. And I apologize on behalf of the organizing team for not being able to take up all the questions due to paucity of time. Now I request, so I think over to you, ma'am. Shruta. Yeah, I request Shrota to now propose a vote of thanks on the occasion. So over to you, Shrota. Thank you, madam. Am I audible? Yeah. Okay. Good evening, everyone. I, Shrota Satpathy, would like to take up this opportunity to present the vote of thanks on behalf of the Garden Committee of College and the Botanical Society, Nargis, of Zakir Hussain Delhi College, University of Delhi. First and the foremost, a big thanks to Dr. Karuna Paul Gupta, ma'am, our speaker, for giving us this precious lesson for life. As wisely said by ma'am, it is not I am rooting a tree. It is all about the tree rooting for us. This quote of ma'am makes me introspect. Nature roots for us. But what do we do for the nature? कहने को संग अपने एक दुनिया चलती है, पर हर पल इस दिल में एक तन्हाई पलती है. Are the infamous lines from the movie Oh My God that we seldom use to quote our solitude. So why not make a friend today? A friend who will hear us, grow with us and care for us. All we need is a place for them to grow, both in our heart and on their land. And they will teach us the secret to grow with stillness, to provide and perish with love. So, let's name the plant we potted today and tie a knot of love and care with them, and we will be never alone. On this note, I would like to thank our Honorable Principal, Dr. K.K. Arora, sir, for giving us this opportunity to stage the event. Moving ahead, I would like to extend my gratitude to Dr. Babita C. Kola, ma'am, President of Nargis and the convener of the Garden Society, for conceptualizing the whole program. She seems to be eating, breathing and sleeping only plants. I would also like to thank Dr. Sarita Pase, ma'am, from Chemistry Department, also a member of the Garden Committee, for her invaluable inputs throughout the event and the preparation of the program. Thank you to Dr. Deepika Sharma, ma'am, for her guidance and technical support. Thanks are also due to the office bearers of the Botanical Society, Nargis, BG, Mritika, Asra, Preeti, Abrez, Asna and Pragati for their efforts to make this event a success. Last but not the least, the audience were the biggest inspiration and the enthusiasm was commendable. Without taking any more time, I would like to conclude by saying that we have planted a hope today. Let's nourish it together so it becomes a change tomorrow. Thank you, everyone. Over to you, ma'am. Thank you, Shrota. Can we ask all the participants to put their videos on and show us their pots and twigs? Yeah, here is mine. Now, the activity that basically we wanted you to do today is, it may not be possible for everybody to show you a pot, but taking this for granted, that we have realized it's our responsibility. Nobody is going to monitor us. We are not going to be judged for this.
Nobody is going to grade us. Let us act responsibly and start from today. So a small activity that we wanted to do, since there is a little bit of time paucity, the idea is that what you have selected today is a pot and a plant. Did you do it mindfully, or you just like that, you know, picked up a plant and a pot without thinking which plant is this? Is it suitable to grow it by cutting? And where are you going to use it? Are you going to gift it? I will show you. Dr. Khosla is there. Yeah, so this is the pot she has given me on my birthday, and it's now more than 5-6 years, and I every time love you know, nurturing this plant. And likewise, I have more pots. I'm just showing these. I know you might be having much more beautiful and much more exotic plants than this. The idea is that we can do these small activities, and when we are gifting our friends, their children, or our cousins, or anybody, we can give these plants in as gifts rather than giving you know, anything else. Maybe along with that, this plant can also be given. So this change has to start. It has already started, but we are reiterating today that let's all together do it and make a change by making it a habit to grow plants, live with them, understand them, beautify them, and do it mindfully. If we do it, you know, mindlessly, then obviously if we don't take care of them, they don't look as beautiful as we wish them to look. So there lies the change. In fact, the toporis that you have seen, I mean, they were amazing. These pictures were selected by Dr. Sarita Pasi. And if you look at them, they are so well maintained and so healthy that, you know, people who are doing this work, they do it like it's your own subject. As you have seen, Dr. Karuna Paul Gupta, she's you know, into this subject now. So it is a proper subject, and I want all our youngsters, all our students to take it seriously and do it mindfully. Dr. Deepika, can you have the last slide? So this activity had to be cut short a little. Otherwise, the idea was to ask you people, could you identify the plant that you have selected? The pot, have you done it with a thought or without, you know, randomly? So I leave this with you and wait for the photographs that you are going to share with us before September 2. Dr. Deepika, can I have the last slide? Ma'am, it's already there. It's not. She did show it. She did show it. Okay, it's not visible to me. Can you share it? It will be there now. Yeah, we can see it. Okay, we can see this. Yeah. All right, it's not visible to me. I do not know why. All right, a small, you know, request from on behalf of College Garden Committee and on behalf of Nargis Botanical Society. It's a humble submission to everyone present here that we should act as responsible citizens, and without having this thing in mind, whether we'll be given marks for this, grade for this, what is my age, is this the right age to start? Every age and every person has to make a beginning, and let it be today, 31st August 2021, and let's plant trees mindfully, and let us do it now before it is too late to see that our little ones gasp for breath. So wishing you all very happy and environment which is free of pollution, and with these words, with this request, I would formally close today's session, and I thank each one of you for your gracious presence. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I think Babita, someone needs to take before we close down. तो chat भी बंद हो जाएगी. Someone